हम यहाँ B20 के समिट में हैं एंड बहुत सारी कॉर्पोरेट इंडिया के साथ हम बातचीत कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द मूड और इंडिया इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म और हम कितना और क्या एजेंडा पुश कर रहे हैं थ्रू आर कंट्री एंड द टेक्नोलॉजी पीस इज़ कमिंग आउट टू बी द वेरी the backbone of every industry that we are talking about. और मेरे साथ इस वक्त a man who really needs no introduction, हम सब जानते हैं, Kris Gopalakrishnan, who's been with Infosys. आप founder रह चुके हैं सर, one of the co-founders of this great institute in the IT space. और अभी आप वेंचर फंड के रूप में बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स पे काम करते हैं सर। सबसे पहले हमने यहाँ जो कमिटीज़ और इंडिया ने जो एक अपनी लीडरशिप ली है B20 में, जो हम सॉल्यूशंस फॉर द फ्यूचर की बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पर खास फोकस रखते हुए, क्या इंपॉर्टेंट 2-3 बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं और हमारी एज क्या है जो हम लेवरेज कर सकते हैं? Clearly, the strengths of India have to be leveraged. The strength of India, one is the digital technologies, our ability to bring about inclusion, affordability, equity using digital technologies. We saw this during COVID, and we are seeing this with UPI and payments and things like that. And we are now recommending that some of these initiatives be taken globally. We are also recommending that we create a platform for collaboration using digital technologies. That's one of the recommendations from our task force, saying that we need to create a collaborative platform for R&D and innovation. The second recommendation from our task force is using deep tech and emerging technologies for solving problems hitherto were unsolvable. Things like cure for cancer, looking for using space to create a global conservatory, looking at the state of the world or state of the earth, um, in terms of climate change, in terms of uh, oceans, in terms of forest cover, things like that. And the third pillar is uh, clean tech and circular economy. One of the recommendations here is how can we replace plastic with biomaterials and things like that, so that it is biodegradable. Can we look at standards for recycling? Recycling doesn't have standards. And some horizontal recommendations is, one is looking at increasing the number of women who are taking careers in STEM. So these are some of the recommendations, but the broad theme is responsible, innovative, sustainable, equitable uh, use of technology, use of our secretariat or our presidency of G20. वंडरफुल सर, बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपने कहे और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस जंक्चर जहाँ हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं इन अ बिग वे, और आपने उस पर टच अपन किया। लेकिन सर, एज स्टार्टअप्स एंड आप जिस तरह से इस कम्युनिटी को बढ़ते हुए देख रहे हैं, कैपिटल इसमें आना एक एक बड़ा अभी भी क्वेश्चन मार्क है, अभी भी कंसर्न्स हैं फॉर कैपिटल टू इजीली फ्लो इनटू द स्पेस। तो उसके लिए क्या काम होने चाहिए, किस तरह से ये, क्योंकि ये एक नई हमारे लिए कभी पहले ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, सो ये एक नया दिशा में हमें बढ़ना होगा। तो आपके हिसाब से आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस? First of all, what we are seeing today is um, the impact of global economy on the funding that's available. The global economy is going through a slow period, and hence Indian industry, Indian startup ecosystem is affected because a lot of the Series B and beyond funding comes from outside the country. So one of the things that we as CII is encouraging is to have domestic capital come into the startup space, Sure. because that can act as a buffer against the vagaries of the global capital flows and things like that. Second, uh, we are also recommending that um, we need to allow these Indian companies to um, uh, list in Indian exchanges, access public market capital. It is allowed now, but
we need to think about, maybe we need some streamlining of regulations and things like that to make it better or easier for them to access the public market. Those are some of the thoughts around access for capital. But I'm optimistic in the medium to long term. India will be a prime location for startup creation. India, because Indian economy is growing faster than any other economy, बिल्कुल and sir. startups will benefit from that. 100% एंड आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और इसी पे मेरा आखिरी सवाल है जिस तरह से इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है अमिट्स ऑल द वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक हमने डेफिनेटली कुछ अलग किया है आपके हिसाब से हमारी क्या इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है और हमें क्या कंटिन्यू करना चाहिए टू मेंटेन द लीडरशिप पोजीशन दैट वी आर टेकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम So many of the um, initiatives taken by the Prime Minister Modi and the government, in terms of, for example, supplying free food grains to thousands and millions of people during the challenging period and COVID and things like that, that is being continued. Looking at looking at ways in which we can support SME sector during the downturn. Again, not increasing inflation or inflationary tendencies. So the policies of the government has clearly helped us manage our economy much better and sustain the growth, right? So, because skilling, for example, making more पॉलिसीज जो हुए वो फेवरेबल नहीं है wo- वही कारण है clearly, our policies have kept inflation under check and maintained the growth. रेड फ्लैग सर इनसे हमें दूर रहना Clearly, we have to be careful about climate change. Climate change is not just, of course, India's problem, but it's a global problem. But this is again why we are recommending in the G20 that we need to work together, accelerate our actions on climate change. थैंक यू सो मच अप्रिशिएट योर टाइम सर थैंक यू